एवरीवन वेलकम बैक टू अवर चैनल। स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन जो कि 45 वर्ड पर मिनट फ्लक्चुएट डिक्टेशन रहेगा। स्टार्ट इन 5 सेकेंड। स्टार्ट। मिस्टर वाइस चेयरमैन सर, द मोस्ट dramatic event of the last year and perhaps the most significant in the history of free India was the underground nuclear explosion. The president's address has taken due note of this event, and the President has rightly congratulated our nuclear scientists and engineers on this important achievement. However, a serious omission in the president's address is that he made no mention of the hundreds of other scientists who are working in equally important fields such as agriculture and fisheries. Particularly this year, when agriculture has become the whole pivot of our national progress. I would have liked the President to have made at least a mention of those dedicated scientists and technologists who have been doing brilliant work for the development of our countryside. Whenever one visits an agricultural research institute in any part of the country, one is impressed by the dedication and energy of our young scientists engaged in doing the most advanced research in agriculture, dairy, fisheries, soil research.
reclamation of desert areas, forestry, all of which are crucial to our development. At the same time, one gathers the impression that there is a great deal of frustration in our scientists today on account of lack of encouragement and the poor condition in which they often have to work. Atomic scientists are perhaps somewhat better looked after than the other scientists. But on the whole, we cannot say that we have treated our scientists very well. Even today, after all the advance we have made in science, I feel that our scientists have not received the appreciation that they deserve. The majority of them are still treated just like functionaries in a government department. Poor salary, indiscriminate transfers, promotion of people merely according to seniority and not on the basis of merit or special experience. These are the complaints that I have heard from scientists. Whenever I visited any of our leading scientific institution, I suggest, sir, that the time has come when we should not only raise the prestige of our scientist community but also substantial improve their material rewards and conditions of work. When I say material rewards, I do not mean just salary. More important is the kind of working and living conditions we provide for the scientist, how far we can reduce their domestic worries so that they can concentrate on their work. डिक्टेशन स्टॉप. अब ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर एंड ग्रामर रूल को डिस्कस करेंगे. ओके ये टाइपिंग स्टूडेंट्स के लिए और जिनकी स्पीड स्लो है, जो फ्रेश स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने स्ट्रोक्स बना रखा है, बना लेते हैं धीरे धीरे और उन्हें और प्रोफेशनल होना है और सीखना है. ओके तो उन स्टूडेंट्स के लिए है 5 टाइम्स, कम से कम 5 टाइम्स लिखें एक ही डिक्टेशन को, जो कि 45 एंड 40 से 45 वर्ड पर मिनट फ्लक्चुएट डिक्टेशन है ये. और जो स्टूडेंट्स फिर उसके बाद शॉर्ट हैंड वाले स्टूडेंट्स एंड टाइपिंग स्टूडेंट्स, बोथ स्टूडेंट्स ये लास्ट वाला जो सेशन है वो ज़रूर अटेंड करें. इसमें मैं इम्पॉर्टेंट स्पेलिंग्स एंड ग्रामर बताती हूँ. ठीक है, जैसे कि फर्स्ट है ओमिशंस. ओमिशंस OMISSION होता है. ठीक है, तो ये याद रखिएगा. एंड नेक्स्ट है जैसे कि ग्रामर रूल हो गया ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ अदर साइंटिस्ट. ओके तो ये देखिए द हंड्रेड्स ऑफ अदर साइंटिस्ट, तो हंड्रेड्स है ऑफ अदर साइंटिस्ट जो कि नाउन, इसका इस सेंटेंस का नाउन साइंटिस्ट है. इसी को फॉलो करते हुए जो मेन वर्ब आई है वो प्लूरल वर्ब है. ओके एंड नेक्स्ट है
हैज़ हैव के बाद वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट वर्ड मैंने यहाँ पे दिखाया है, देखो, इनडिस्क्रिमिनेट। इनडिस्क्रिमिनेट का पूरी स्पेलिंग लिखिए और इसे थोड़ा लर्न करिए। इसका मतलब होता है दरकिनार करना, ठीक है, इनडिस्क्रिमिनेट करना, उन्हें अलग कर देना किसी चीज़ से, उसे दरकिनार कर देना। कोई जैसे कि कोई प्रॉफिट है, ठीक है, ऑफिस में सैलरीज हैं, उससे उसे वंचित रह जाना, ठीक है, वंचित रह जाना, तो वो होता है इनडिस्क्रिमिनेट। एंड सब्सटेंशियल, सब्सटेंशियल का मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट। सब्सटेंशियल की स्पेलिंग देख लिए, SUBSTANTIAL, सब्सटेंशियल। ओके, तो ये रहा ग्रामर रूल एंड स्पेलिंग्स जो इम्पॉर्टेंट होती हैं, ठीक। जैसे कि मैंने और पहले ही बता चुकी हूँ मैं कि जो पास्ट इंडेफिनिट होता है उसमें क्या फॉलो होता है, और जो पैसिव वाइज एक्टिव वाइज होते हैं। और जैसे कि ये सेंटेंस है द हिस्ट्री, तो हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री एक नाउन है, ठीक है, और इसके पहले आर्टिकल द का यूज़ हुआ है क्योंकि ये हिस्ट्री है, ठीक, जिसे हिंदी में इतिहास कहते हैं, इतिहास। और फ्री इंडिया, ठीक। एंड प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट्स जो भी होंगे उसके पहले आर्टिकल का यूज़ होगा। एज यू नो दैट ऑल द स्टूडेंट्स, हैज़ हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ये हमेशा याद रखना। जैसे कि एग्जांपल दिया जाता है केम, कम, बिकेम, बिकम, तो इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, नोट्स बना लीजिए। एंड शॉर्ट हैंड का एंड टाइपिंग का बहुत प्रैक्टिस करनी है आपको, 5 टाइम्स ज़रूर इसे वीडियो चला चला कर लिखना है। ओके, टेक केयर।